Yeah. सर अगर Hello. आपका टाइम हो तो Hello. थोड़ा सा बता Actually, दें। my name is Bhaskar Mukherjee. I am from Kolkata, West Bengal. বাঙালি। So yes, yes. নমস্কার, আমিও বাঙালি। খুব Namaskar. ভালো লাগলো মানে একজন বাঙালি থেকে। Actually, I got this message from ওকে, WhatsApp link. ওকে। So I joined. Actually, I am working in a MNC G Power General Electric. আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল, So I ওয়ান্ডারফুল। am working as I am electrical engineer basically by background, and I am working as a lead quality engineer ওকে, in G Power. ওকে। So, so this is all about. And I have no idea about this new methodology actually. अच्छा, so This how is first come you time. मतलब you saw the message and how come you just something must have happened in Yes, actually I got the message and I was interested to know that how it can change our life. okay, So for that only I am interested to take part. अच्छा, wonderful, superb, superb, superb. So um मोनिका जी, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन वी विल बिगिन द प्रेजेंटेशन एंड ऑल, सो व्हाई वी आर हियर एंड व्हाट फॉर वी आर हियर. Okay, Monica ji has sent a chat. Wonderful. So आप लोग सबसे I'm going to use two languages and I am good in three languages, English, English and Bangla, and very good to have a Bengali from Calcutta here. Wonderful. And yeah, thank you so much, Monica ji. And you guys can all use, आप chat box use कर सकती हैं, and आप normal भी जब भी you can send a message across, or you can raise your hand in reactions, or you can raise your hand if you have any questions. Just you can raise your hand and we will answer. So this is a very small team, and we are expecting around 3-4 more people to join, but we will not waste our time and we will start the presentation right away. So, with your permission, if you have permission, I wanted to introduce myself. Just going to share my screen. So, can you all see the screen? If you can see the screen, just type in the chat box. Yes, we can see your screen. Just we'll admit one more question. The person is coming. Preeti ji, good morning and welcome to this program. Preeti ji, you can unmute and you can just give a little bit introduction about yourself, or you can use the chat box. Okay, Preeti ji, welcome, and we are going to start, and I'm just going to share my screen once more because I was welcoming you. And okay, let me, with your permission, introduce about myself. My name is Satya Datta. I am basically author of the book Source. So I feel that I have not written the book because in the year 2018 something had happened in my life, and I was very upset with myself. मैं कुछ गलती कर दी थी, मैंने कुछ गलत investments in a project, and the project was completely stalled. And what has happened is uske baad I was into various spiritual subjects. I will just tell you, share about, and suddenly I got a meditation. मुझे कुछ flow मिला, and when the flow came, I got an image in my Mingmen. Basically, Mingmen is a kind of an acupressure point in the backside of our in the just backside of our navel. It is called as a life gate. So it is called a Dao point, and it has got huge power. There is various energy centers in the body, and one of them is Mingmen. So I got an image during my meditation, and when I was soul communicating with that image, when I was trying to understand the image, जब मैं उस image को देखने की कोशिश कर रहा था, बार बार समझने की कोशिश कर रहा था, so मुझे एक अजीब सी information सारी मिलनी शुरू हो गई. So I found that everything is made up of source. The whole universe, कहीं एक point ऐसे point है जहां से पूरी universe की सृष्टि हुई है, and we are actually part of this source, and source is the source of everything. So whatever we see around us, whatever is happening in our us, source is the source of everything. Source is the source of love. सोर्स इज द सोर्स ऑफ फॉरगिवनेस. सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारे पास जितने भी पैसे वगैरह है. एक्चुअली सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग. तो ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि सोर्स से हुई है. एंड द बुक, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये बुक मैंने नहीं लिखी है. मुझे लगता है कि ये बुक कोई फ्लो था एक, और मैं जब करता गया इस बुक को, और ये ऑटोमेटिकली ये बुक आती गई और ये बुक पब्लिश हो गया. एंड नोशन प्रेस ने इसको पब्लिश किया. अभी करीबन 150 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड इस बुक को
भेजा गया है, एंड बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल थोड़ा सा इसका स्पीड स्लो है, बट it is being sent and a lot of people are buying this book, and thoda different types of comments we are getting, and very nice comments people are sending about. I am a numerologist. मैं मेरे two teachers है, Rajiv Parashar, and there is one more teacher from whom I have learned numerology. I'm an astrology from Bharatiya Vidya Bhavan. I am a silver medalist in Jyotish Acharya Junior, and I'm a Reiki Grandmaster. So I have been associated with various hospitals, and मुझे दो बार America से, by the blessing of God, I have got award in for my energy healing in my paper in cancer. For my paper in cancer, and I am also a divine healing hands practitioner. So there are different frequencies which are available in the universe. And Jyotiji, welcome to this group. Welcome. You can use the chat box to share about yourself, who you are and all, and very, very welcome. I welcome you in this webinar. We have almost started the webinar. I'm just giving my introduction and you can just join through. And I am also a Dao hands healer, and I'm a student of Lama Fera. Lama Fera is a Buddhist technique of healing. It's supposed to be a very fast energy healing system in which we invoke the power of the enlightenment beings and work on that. And I'm also blessed with Kundalini Kriya Yoga meditation. Shiv Gorakshanath Babaji's Kundalini Kriya. So I'm very blessed and honored कि मुझे ईश्वर ने चूज किया, या heaven बोलो या higher power ने बोलो, they have chosen me to understand all this subject. But the question is that the most important question in this workshop is why one wants to learn numerology. हम numerology क्यों सीखना चाहते हैं? तो न्यूमरोलॉजी सीखने का दो तीन कारण होता है. जैसे आप लोगों ने, काफी लोगों ने बताया कि आप लोग यहाँ पे आए, शायद किसी से इंफॉर्मेशन लेके आए, या अचानक से आपने एक वेबसाइट में देखा, या आपने फेसबुक में देखा, या व्हाट्सएप में देखा, तो एक आपको फीलिंग पैदा हुई, एक काइंड ऑफ इनर कॉलिंग पैदा हुई. एंड इस इनर फीलिंग के वजह से, इनर क्वेश्चन के वजह से यू हैव एक्चुअली कम हियर टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली तीन तरह की इश्यूज है ह्यूमन बीइंग के लाइफ में ना. एक है कि कोई ना कोई इंसान आज के डेट में, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम कहाँ है बेसिकली. वेलकम, वन मोर पीपल आर जॉइनिंग. Welcome, sir. Welcome to this program. Tanya ji, very good morning. Welcome to this program. Thank you so much for coming. Just quickly welcome all of them because they're coming. Sorry, we will be welcoming people. That's why it is. Yash ji, welcome to this program. Yash is connecting. I think some problem with this audio. Anyway, we will continue. So people have basically three kinds of issues. Either people are looking for solution to some kind of a problem. Now, what is a kind of a problem? किस level में problem आता है? The problem can be in finances, and the problem can be in health. The major thing, because हमने last कुछ 2 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर देखा, people suffered so much in health. Health में कितने सारे issues हुए हैं. And people have relationship issues. So the relationship is just not with people. There are various kinds of relationships in the world. Relationship with your, of course, with your finances, relationship with your career, you have relationship with your environment, you have relationship with your higher souls, higher God, Bhagwan, Allah, जो भी चीज आप कहेंगे, उनके साथ relationships आपकी.
people are also have issues with their vocation. Okay, many people have many kind of talent, बहुत लोगों के पास बहुत तरह की talent है, and the main important thing is number one, what to do with the talent. लोग उस talent को लेके क्या कर रहे हैं, तो वो आज के अपना खुद का talent भी एक तरह का problem हो गया ना, how to utilize the talent. But one thing is sure that कुछ चीज ऐसी है जिससे काफी लोगों की मदद हो सकती है. So that is also an issue in human life, that how to use their vocation and the talent for the welfare of themselves or for the welfare of the one kind. इससे क्या निकल के आता है, what is the purpose of life? People, many of the people, some of the people are very very clear with their life that what is their purpose, and but there are some people who still have a little confusion. They are doing job, they're doing many things, they're into business, but उनको पता नहीं चल रहा कि एक ऐसी चीज है जो अंदर से satisfaction नहीं दे रही, कि how we will get satisfaction in that. So that is a kind of an issue. That is why people nowadays are trying to look into various fields like astrology, numerology, other science, other motivation thing. But numerology, yes, can give some kind of an answer to that. So spiritual journey. Spiritual journey is the most important journey, because we believe that the soul is traveling from one lifetime to other, एक lifetime से दूसरे time, and soul has got a huge potential inside it. Soul की potential बहुत ज़्यादा है, and the purpose of human life is to find this soul potential, and find this soul purpose. So these are the problem areas which people are trying to explore. They really wanted to know more about themselves. They really wanted to know कि हम कौन है, हमारी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस गेन करेंगे, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ गेन कर सकते हैं, कैसे हम बेटर रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने टैलेंट को यूज कर सकते हैं, हमारी एग्जैक्ट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, किस तरह से हमारी रिलेशन होगी हायर पावर के साथ, गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, या दाव के साथ, हेवन के साथ, उनके साथ. सो एवरी टाइम वी आर ट्राइंग टू डू, क्या हम राइट पाथ में है, नहीं है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर एक्सप्लोरिंग दीज काइंड ऑफ फील्ड्स लाइक न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी. एंड obviously there are some people who wanted to gain more and more knowledge, तो उनको ज्यादा नॉलेज चाहिए. तो उस तरह के लोग भी, all these people are actually looking for kind of a solution, and they are looking for knowledge, and that is why people are getting more and more interested in these kind of field. And also there is a kind of, when we talk about spiritual journey, actually mother earth is passing through a kind of, हमें पता है, it's a kind of a transition is happening. हम देख रहे हैं आज के डेट में the pandemics are increasing, there is a kind of the floods, economic problem, there are wars, other things which is happening in this world. So people really wanted to know why these things are happening in the world. So understanding spiritual journey is becoming more and more. So now the spiritual journey and the knowledge of why these things are happening is becoming more and more important. That is why these kinds of sciences are becoming important for people to understand more about that, why and how, why these are happening and how they can change their life. And there is a third kind of people who look for these kind of subjects. उनका क्या aim है? To understand numerology, or they wanted to learn numerology. उनका main aim है, it's a beautiful aim. They wanted to achieve some kind of a goals in their life. उनकी कुछ goals है, desires and aspirations है. It's very important. Now, aspirations, goals कैसे हैं? क्योंकि they wanted to achieve something for their own self. This is very good. And they wanted to achieve something for their family. They have a family goal. जब मैं अपनी family को इस stage पे देखना चाहता हूँ, इस तरह से देखना चाहते हो, I wanted to see my family financially protected, and I wanted to see, and finally there are people who have very grand goal. उनका goal काफी बड़ा है. They really wanted to. हमने देखा होगा काफी सारे बुद्धिजीवी हैं इस दुनिया में. There are many people who have very big goals. Like for example, we know there is Isha Foundation. वो क्या करते हैं? The earth is my responsibility. The world is my responsibility. There are people like Anthony Robbins. There are people like big people like even Mark Zuckerberg. उनकी गोल क्या है? They have a very grand goal. They are doing something that is actually changing mankind. Like Steve Jobs. उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें प्लेटफॉर्म आविष्कार की थी जिसको लेके बिल गेट्स ने भी अपने कंप्यूटर बनाई. बट what was their plan? His plan was to do something. His plan was to create something in which the whole humanity gets changed, gets affected. जिससे humanity की फर्क पड़े. जी, ये देखिए, ये मेरी दोस्त यूके से आई है. Madam, I request you to mute yourself. We can. Yeah. Okay. So this is the purpose of that, why people are seeking these kinds of subjects at the moment in this time. And so how
if we look into this, तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है आप लोगों को? कहीं ना कहीं से आप लोगों को पता चला न्यूमरोलॉजी के बारे में, that how numerology can help you. So first of all, let us understand what numerology is. What is the purpose of numerology, and let us try to understand what numerology is. So as I said, when I was flowing this book, I realized that source, there is some power in the universe which is the ultimate power, which has created everything in this universe, everything. And that power has given a kind of various tools, laws, and methods in which to keep the whole universe in a great balance. Since it has created the universe, so it wants to keep it great balance. And there are souls which are having different soul standing, and because of which source has given some tools for understanding their life purpose, and to make their life completely fulfilled. And numerology is one of the source tools, because since source has created everything and source has kept everything in great balance, that is why the human being are in a kind of a soul standing, in a particular soul standing. Human being is a kind of an evolved species. एक ऐसी species है जो कि animal के तरफ से आई है, because if we see the evolution, but it has got a huge potential to grow further because of the presence of soul, mind, body and emotions. So यहाँ पे अभी मैं जब starting में मैं रबिया जैसे अभी बात कर रहा था, so रबिया जी भी same चीज बोल रही थी. She was talking that we are just not normal human beings. We are having a body. हमारे पास एक body है, हमारे पास एक mind है, a powerful mind. हमारे पास एक emotion is called as energy in motion, and हमारे पास एक soul power है, and we are being supported all around by various energies. So source, as through numerology के तरफ से उसने एक ऐसी चीज ह्यूमन बीइंग को दी है, ऐसी नॉलेज ह्यूमन बीइंग को दी है, that human being can use this source tool for welfare of themselves, for understanding their life path, and understand and live a fulfilled life. Okay, we have come with an expiry date. हमारे हर एक के पास, whoever is present in this room, we have got an expiry date. हम एक टाइम में आए हैं इस धरती में, which we cannot change, which is very important day, the day of our birth. It is having a lot of power inside it, and एक दिन हम अपनी धर्म कर्म कंप्लीट करने के बाद we will disappear from this place. Okay, that's very fact. Nobody can stay here. हमारे sorry to say, but this is a general fact. But in between what we do is very important. अगर in between हमने क्या चीज किया, तो actually source, as the creator of the whole universe, has given us all the material inside us. So the higher teachers, mentors, gurus knew about all these things. Higher religious people knew about all these things. Now it is, I think, time for all of us to know about ourselves. So for example, मैं हर एक को ये चीज बताता हूँ, इवन मैं अपनी फेसबुक पोस्ट में बताता हूँ कि जब भी आप कोई बाहर कोई चीज खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वांटेड टू बाय अ मोबाइल फोन और ए लैपटॉप, आप उसकी स्पेसिफिकेशंस पूछते हैं कि कितना इसका पिक्सल कितना है, इसकी वीडियो कितनी है, इसकी रैम कितना है, इसके अंदर मेमोरी कितनी है. हम जब लैपटॉप खरीदने जाते हैं, सेम चीज हम पूछते हैं कि ये कितना देर चलेगा, बैटरी लाइफ कितनी है. बट हम रेयरली, देयर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आस्क अबाउट देमसेल्फ कि हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारी ब्लूप्रिंट क्या है, हम कितनी देर चलने वाले हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं इस दिन के अंदर. So basically these things have already given insiders, and but only thing is that हमारे पास एक ऐसी टूल होनी चाहिए, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और कुछ लोग वैसे होने चाहिए जो कि इसमें इंटरेस्टेड हो और जो कि फाइंड आउट कर पाए कि what is inside us and able to discover it, so that वो अपनी जिंदगी को हो सकता है इसको जानने के बाद बेहतरीन चला पाए, एंड खुद की मदद कर पाए, दूसरों की मदद कर पाए, एक बेटर दुनिया क्रिएट करें. So numerology, as I said, is one of the tools. Now, why numerology is one of the, I think numerology one of the best tool, because it is one of the easiest tool. Because हमारे पास numerology है, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, हमारे पास दूसरे ज्योतिष है, हमारे पास काबला थ्योरी है, हमारे पास एनर्जी सिस्टम्स है, साइंसेस हैं, we have premonitions, everything. But why numerology is the, I think, is one of the best tool, because it is very easy. Once you understand it, it has various patterns. Though it is a very, I am not saying it's going to be very complicated. It is not that easy sense, but the preliminary part of this is very, very easy. If you start understanding and develop interest, आप अगर इसमें interest develop करेंगे, तो आपको अचानक से अजीब-अजीब चीजें अपने बारे में, अद्भुत चीजें अपने बारे में पता चलेंगी. You will start to know, you will feel a wow effect. अच्छा, ये चीज है, ऐसा हो सकता है, this is possible. So that is why it is a really wonderful tool, and it is
like as I say that as anybody is a student of science, then he will know that maths, the अंक is the base of everything. हर चीज के पीछे एक mathematics काम कर रहा है. So maths is the base of everything. Anything you take, any subject, whether you take physics, chemistry, or you take biology, or you take even singing song, you take colors, if behind everything there is a mathematics which is working. And so maths is the base of everything. But similarly in astrology also, maths is the base. Without a calculation, without ganita, nothing is possible. So numerology is like a base of maths. So using this tool of maths, using this tool of mathematics, we can understand ourselves much more better. We can understand about the body potential, soul potential. We can understand about mind potential. We can understand about career potential. We can even discover luck and fortune using this. We can understand about stability. We can understand about relationships. Everything is maths around it, because our base is maths. If we go deeper in us, हमें पता चलेगा हमारी DNA, RNA, everything has a mathematical symmetry. अगर केमिस्ट्री में जाए, कार्बन मेटल्स की हम बात करते हैं तो उसमें भी मैथ्स है. अगर हम बिजनेस की बात करते हैं उसके अंदर द कंप्लीट बिजनेस इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. So that is the fun part of this, and that is why numerology is one of the easiest science. Agar if you really love mathematics, so you can understand this in a much more detailed way. And then the question arises. The one question arises कि अगर सब कुछ source से आया है, if everything source is created, everything source is given this knowledge, then why people are suffering? So इतनी suffering क्यों है दुनिया के अंदर? इतनी सारी problems क्यों है दुनिया के अंदर? So the answer to this, which is actually coming with us, is that human beings are not aligned with the laws and regulation of the source. क्योंकि human being के पास एक भगवान ने एक blessing दी हुई है ना. Blessing का क्या मतलब है कि human beings, though they are actually under some laws, rules and regulations, but human beings also have something called as a free will. उनके पास एक free will है. Now using the free will, they can decide. Like for example, घर में एक बच्चा है तो बच्चे को मदर एंड फादर पूरी तरह से देखते हैं. बच्चे को उसको देखते हैं कहीं हाँ तो नहीं काम कर रहे, बट उसको एक फ्रीडम भी देते हैं कि वो अपनी तरह से काम कर सकता है. उसमें कभी कभी क्या होता है, वो कभी भी गिर जाता है, कभी कभी उसको चोट लग जाती है. हमारे साथ भी बिल्कुल सेम चीज है. सो सोर्स इज लाइक अ फादर टू अस, ही इज लाइक अ फादर टू अस, बट हम लोग सफर इसलिए करते हैं कि कभी कभी हम लोग इस रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस के बाहर चले जाते हैं. एंड व्हेन वी कम आउट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर, तो what happens is that कि we start suffering, and that is where the numerology comes in the picture to understand our life path. कि कभी-कभी suppose for example एक छोटी सी example दे रहा हूँ, there are some businessmen who enter into the business and suddenly they realize कि उनकी business loss में चली जा रही है. उनको समझ में नहीं आ रहा, because उनकी जो make है it is to do something else, and that is why उनकी जो nature है, उनकी जो feeling है, उनको जो emotions है, that is actually related to something else, but they're trying to do something more logical, more systematic, and in उसमें क्या हो रहा है कि their life is getting under some kind of a pressure. So it's very important to understand that why you're suffering. Human beings basically suffer because they are not in alignment. One of the reason is they are not in alignment with the source. So what is now the purpose of numerology? Now the purpose of numerology is one of the things is a purification. Now why is it purification? That you, whenever you are doing something in this world, you need to understand emotion. So emotion is the most important thing. So जब तक आप उस चीज को इमोशनली नहीं करेंगे तो उसमें सक्सेस कैसे मिलेगा? बिकॉज वन इज कॉल्ड एज माइंड. माइंड हैज गॉट ग्रेट पावर. व्हाट माइंड कैन थिंक, माइंड कैन अचीव, बट माइंड नीड्स अ ग्रेट पावर फ्रॉम आवर हार्ट. उसको एक एनर्जी चाहिए उसके अंदर से. तो दैट एनर्जी, द प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट if we really wanted to do something, we need a kind of a purification to go for it and achieve it further. So numerology is a great, once you are becoming a student of what you develop. There are various students who enter into numerology or these kind of divine science. उनका purpose ही हो जाता है धीरे धीरे करके that they wanted to help others, they wanted to help themselves, they wanted to understand more, and the more purified they are, so they are going to get more blessings, they are going to get more flows from the universe, they are going to get more higher energies from the universe to work out further. So one of the purpose of the numerology is to purify yourself, and it is a divine science, it is a higher science, and in which there are devatas behind each and every number.
So the number doesn't come like that. Now when I say devata, devata matlab hai there is a conscious energy, there is a conscious energy which helps us all the time. So there are various energies all around there. बेसिकली जो हम जो चीज देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर, वो हम सिर्फ विजिबल दुनिया देख रहे हैं. देखिए, हम देख रहे हैं अपना घर देख रहे हैं, हम फैमिली देख रहे हैं, हम दुनिया देख रहे हैं, हम दिन देख रहे हैं, रात देख रहे हैं. But there are so many things that is happening all around us. There are so many things which is happening already, and there are all the times there are some energies which come and bless us. हमें बहुत सारी energies मिलती है, वो आती है, हमें bless करती है. So this science of numerology is that science behind which, उसके पीछे कुछ planets हैं, उसके पीछे कुछ देवतास हैं, which actually helps us. The energies which come and help us in our life, they are always ready to help us, but depend करता है हमारी free will कितनी है, कितनी हमारी purification है, so that we can understand and feel their love, so that we can understand and feel their blessing. So that is very, very important. So that is why numerology is very important. So the purpose of numerology is to align yourself with the higher source, because as I said, this is like when we are talking about numbers, it is just not numbers. The numbers are connected with the higher frequency of the planets, because हमारे जन्म से पहले से ये planets घूम रहे हैं दुनिया के अंदर, और planets के पीछे और भी higher consciousness है, which helps the planet also to revolve all around us. So this is how the universe is working. So for example, if suppose anybody is working in a job में कोई उनका एक manager है, manager के पीछे कोई और एक है, उसके पीछे CEO, उसके पीछे owner of the company. Similarly, in numerology also, when we are talking about numbers, we are talking just not about numbers. Numbers is the final frequencies which are affecting us, which are inside us और हमारे बाहर है. But these frequencies are actually connected. इनकी जो rulers है, they are like planets which are actually influencing these frequencies. Then there are nakshatras and other stuffs. But there are also devatas behind it. Devatas matlab they are a consciousness which are helping you, the energies which are finally helping you, keeping the thing in great balance. So when you enter into numerology through purification and understanding of this divine sciences, you start aligning with the higher energies and start aligning with the higher worlds, and that is very, very important. So when you start aligning with the higher worlds, so you understand कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो, आप एक बहुत बड़ी पावर का एक पार्ट हो. आपके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही है, बहुत बड़ी spiritual frequency काम कर रही है. So that is why when the purpose of the numerology is to make you understand what is the grand lineages you belong to. मतलब आप कौन से family, कौन से वंश से belong करते हो, कौन सी power से you belong करते हो. And once you understand this grand lineage, what can happen? What will happen once you understand the grand lineage? Because ये grand lineage तो ऐसे ही नहीं बैठी हुई, ये energies ऐसे ही नहीं बैठी हुई, ये energies continuously different जगह पे काम कर रही है. जैसे for example sun, हम अगर सूर्य देव की बात करें, तो सूर्य देव is made up of, अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आपस में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और lot of energies are being produced. But क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को burn किए जा रहे हैं, so that he gives light to the whole world. And उस लाइट से क्या हो रहा है, the plants getting photosynthesis हो रहा है, photosynthesis पानी से मिलके, क्लोरोफिल से मिलके फूल बन रहे हैं, पत्ते बन रहे हैं, फल बन रहे हैं. वो फल कौन खा रहा है? फल खा रहा है एक इंसान खा रहा है. इंसान क्या कर रहा है? इंसान फिर दूसरे जानवरों को, दूसरे इंसान को हेल्प कर रहा है. That means हमारा जो जिंदगी है एक्चुअली हमारे लिए नहीं है. This is the thing which you have to understand. The purpose of the numerology is understand that our life is not made for us. Our life is made for the service of the others. Of course, we will serve ourselves, because हम अपने आप को अगर सर्व नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे जिंदा रहेंगे, हम कैसे fulfilled life lead कर पाएंगे. So purpose of the numerology is to serve us, serve our family, parents, mother, father, serve our children, serve our community, serve our office, okay, and serve the country. Okay, every country has numerology, every office has numerology. जिस दिन आप ऑफिस बनाते हैं उसकी एक न्यूमरोलॉजी बनती है. अगर कोई मैरी करता है, शादी करता है, तो ऑर्बिट में अलग से फिर न्यूमरोलॉजी ऐड अप होनी शुरू हो जाती है. एवरीथिंग हैज नंबर्स. When the date starts activating, the number starts activating. And how do we serve others using this power? By understanding their incompetency and understanding our competencies. And that is why the numerology is very, very important, to make us aware of our true power, so that we can serve others unconditionally and karmically increase our soul standing. हमारे पास, हम जैसे पहले मैंने बताया था कि why are we suffering? We are suffering because we are not aligned. Why we are not aligned? Because we are doing something
which is not in alignment with the source. और karma एक ऐसी चीज है, karma is the root cause of all success and failure in life. क्योंकि जो आप करेंगे, there's a universal law. It is going to come back to you with compound interest. So if you're doing good, the good will come back to you. If somebody is not doing good, that not doing good will multiply, and exactly the same thing, not good, will happen to that person. So what will happen when you understand numerology, when you understand your strength, weakness, opportunity, and threats? With that, you can serve others, and once you serve others, you can karmically increase your soul standing. You can karmically increase your frequency. So what is the meaning of frequency? Now, frequency meaning law of attraction. आप जो भी कर रहे हो जिंदगी के अंदर, it is because of your own frequency. So फ्रीक्वेंसी की थ्योरी ये कहती है कि आप जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हो इस दुनिया में, वही फ्रीक्वेंसी की इवेंट्स आपके पास वापस आती है. सो if you are doing something which is of lower frequency, which is not good, then you will attract all the things which is of lower things with you. But if you are doing something from a very high level, high frequency, then what will happen? Your life, you will start attracting everything which is of the higher frequency. So the meaning of the karma means अगर आप karmically आपकी soul standing बढ़ रही है, because if you are doing something good to the public, in all your frequency will increase, and in your life you will start attracting everything which is very good in your life. And that is called as law of attraction. हम इतनी law of attractions की बात करते हैं आज के डेट में, that you think something and you attract something, but there is the law of attraction completely is a different subject altogether, because law of attraction means what is your frequency, what frequency you are living, what is your frequency of your physical body. अगर हेल्थ चाहिए तो हेल्थ की फ्रीक्वेंसी आपके पास है या नहीं, क्या आपने लोगों को हेल्थ वाइज हेल्प किया है या हेल्थ वाइज नुकसान पहुंचाया. अगर हम इमोशन की बात करते हैं, पीपल आर फीलिंग डिस्टर्ब, पीपल आर नाउअडेज डिप्रेस्ड. सो क्या हमने किसी तरह से भी किसी इंसान को डिप्रेशन दी है अपनी जिंदगी में, इस लाइफ में, या एनी अदर टाइम ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो क्या हमने किसी तरह से किसी इंसान को financially कष्ट दिया, have we hurt someone in financially? Very important. So if you have done something like, so karmically you're going to get it back, and similar frequencies you are developing in yourself, and it will attract the same events in your life. If you have done good, major good will start happening in your life. And numerology, matlab, it's an awesome subject to change your frequency, because numerology actually tells you about your purpose of life. Now, once it is a bigger spiritual tool, I say, because people who are studying numerology actually are able to understand unko karna kya hai zindagi mein. If there is a thing they have to do, and when they are doing that, automatically their life will be benefited, and they will be so it is a biggest tool to understand your SWOT analysis. Management या business में हम एक word use करते हैं जिसको बोलते हैं strength, weakness, opportunity and threats. मतलब लाइफ में स्ट्रेंथ क्या है, लाइफ में वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या उस इंसान के पास, उस सोल के पास, उस पर्सन के पास, उसकी सोल माइंड बॉडी में. एक्चुअली दिस हैपेंस इन द सोल माइंड बॉडी एंड स्पिरिट लेवल. सो उनके पास क्या ताकतें हैं, उनके पास क्या चीज को लेके वो थोड़ी सी अपने आप को केयरफुल रहना चाहिए. सो दिस इज द बिगेस्ट टूल, न्यूमरोलॉजी, टू अंडरस्टैंड what is the SWOT, what is the strength, weakness and opportunity and threats for that person. And every nature of event has a thing. आपने एक घर मकान बनाया किसी दिन, आपने एक उसका फाउंडेशन रखा, उसकी एक न्यूमरोलॉजी बनती है. आपने एक ऑफिस बनाया, उसकी एक न्यूमरोलॉजी थी. जिस दिन एक इंसान की शादी होती है, मैरिज होता है, उस दिन एक न्यूमरोलॉजी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है. एवरी इवेंट हैज अ न्यूमरोलॉजी. So every creation has a numerology. That is why it is the biggest tool, and that is the purpose of the numerology. That is why those people who are at the moment here in this workshop, I think they're very blessed people, because they are somehow being guided by some higher power to understand this science. And so are you understanding what I'm saying? If you are understanding, just write the word "you" in the chat box, please, because I am talking and I should also feel that. Thank you, Sushil ji. Thank you so much for this. So you just so you can say either understanding and liking, something like that. You can share in the comment box, and I will be really grateful that you guys are understanding. And so what are the most important thing in numerology? Thank you so much, Rabia ji. Thank you so much. So what are the most thank you so much, Preeti ji. Okay, thank you so much. What are the most important things in numerology? Now, why मैं क्यों बोलता हूँ बार बार कि numerology सबसे easiest चीज है इस दुनिया के अंदर? क्यों easy है? और मैं प्रे करता हूँ भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, कि लोग इसकी कॉन्सेप्ट्स को समझे, क्योंकि इसलिए समझे बिकॉज ये सोर्स टूल है, और शायद एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन विच इज कमिंग इन ह्यूमन लाइफ. एंड बाहर स्पेसिफिकेशन ना देकर अगर इंसान अपनी स्पेसिफिकेशन समझ जाए, और ये समझ जाए कि
हमारे पास हमारे फैमिली में क्या क्या एनर्जीज हैं, हमारे ऑफिस के अंदर क्या क्या एनर्जीज हैं, हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके पास क्या एनर्जीज हैं, अगर हम डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ये समझ जाए कि उसके पेशेंट के पास क्या अवेलेबल एनर्जी है, अगर एक आर्किटेक्ट है अगर वो समझ जाए कि हमारे पास जो जो क्लाइंट है उसकी क्या एनर्जीज है और मैं किस तरह का जगह ढूंढूं, उसको कैसे चार्ज करूं, उस एरियाज को किस तरह की एनर्जी लेके, तो एक अजीब सी मजा आ जाएगी दुनिया के अंदर। बिकॉज हमारा पर्पस यह है कि हम इस दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एवरीडे बढ़ रहे हैं, हमारी इस पूरी फ्रीक्वेंसी को हमें बढ़ाना है और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नॉट जस्ट नॉट रिस्पॉन्सिबल विद सम पीपल, और जितनी जल्दी हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। सो मैं क्यों कहता हूं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज रिलीजिंग सम काइंड ऑफ अ मैसेज। ओके, हर चीज से एक मैसेज निकलता है। जैसे ऊपर अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट से एक मैसेज निकलता है। हमें मालूम है हाई टाइड एंड लो टाइड्स आता है धरती के अंदर, जैसे पानी के अंदर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आते हैं, because there is certain influences which is coming from even moon and other things. So for example everything is releasing. अगर एक घर में कुछ हम कलर्स यूज करते हैं, कलर्स के अंदर से कुछ मैसेजेस आते हैं, तो एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग इन नेचर, क्योंकि हर एक चीज का बेस के अंदर एक एटम है ना, एटम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, इट इज वाइब्रेटिंग इन नेचर। सो एवरीथिंग इज रिलीजिंग एनर्जी, वेदर वी आर सेइंग विजिबल थिंग, हम कुछ भी चीज देख पाते हैं उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आर कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन जूम के थ्रू, और वो आपके आंखों में जा रहा है, वो इंटरप्रेटेड कर रहा है और आप मुझे देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो। So there is some visible frequency, but there are some invisible frequencies also, क्योंकि हम सिर्फ there are some experiments which are done, हम सिर्फ 4% of दुनिया की चीजें देख सकते हैं, rest of everything is invisible, क्योंकि हमारे को भगवान ने, ईश्वर ने या हायर पावर ने कुछ चीजें ब्लॉक कर दी है, हमारी एक लिमिटेड, हम एक विबजियर ही देख सकते हैं, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हम इंफ्रारेड नहीं देख सकते, हम अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते। सो हम कुछ चीजें देख नहीं सकते, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उससे तरंगे नहीं निकलती, उससे इंफॉर्मेशन नहीं निकलते हैं। तो जो भी विजिबल दुनिया है उससे भी इंफॉर्मेशन निकल रहा है, जो भी इनविजिबल दुनिया है उससे भी इंफॉर्मेशन निकल रहा है। इसीलिए तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि मशीन उसको समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। ब्रह्मांड के अंदर कितनी सारी स्टार्स, गैलेक्सीज फट रही है, बहुत ज्यादा साउंड है, डेसिबल, वो हम सुनाई नहीं देता। जैसे अगर चींटी चल रही है, छोटी सी चींटी चल रही है, हम उसका साउंड नहीं सुन सकते, बिकॉज हमारी हर्ट्स को भी लिमिटेड कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से एनर्जी रिलीज नहीं हो पा रही है। सो सिमिलरली विजिबल एंड इनविजिबल दुनिया एनर्जीज रिलीज कर रही है, एंड ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स भी एनर्जी रिलीज करते हैं। जिस दिन एक बंदा पैदा होता है, या जिस तरह से हम किसी की वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला प्रीति जी, तो प्रीति जी जैसे ही मैंने बोला उसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज हुई और प्रीति जी को समझ में आया, आसपास के लोगों ने उसको सुना। सो आपका नाम एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आप जिस दिन जन्म लिए हो, द डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन सब आके आपको विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक को हम बिल्कुल बदल नहीं सकते, तो डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज जिस दिन हम पैदा हुए, जिस मोमेंट में हम पैदा हुए हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। बट देर इज समथिंग वी कैन ऑब्वियसली चेंज, बिकॉज जैसे नाम होता है, तो नाम हम किसी का पेट नेम होता है, पेट नेम से बुलाया जाता है, और किसी को फॉर एग्जांपल अपना मेन नेम जो प्रोफेशनल नेम है उससे बुलाया जाता है, किसी का कंपनी नेम होता है, तो नेम ऑब्वियसली वी कैन चेंज, बट दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग इन न्यूमरोलॉजी। So what is this numerology? Because जो name है, because we are talking about, when we talk about numerology, we are talking about various systems of number. हमारी दुनिया में बहुत सारे numbers हैं, जैसे hexadecimal, sexagesimal, decimal, binary. The most powerful system of numerology is the binary system. जिस दिन आपको ये binary system का concept समझ में आ गया, miracle हो जाएगा. There are some theories of the binary system. It's a little complicated subject, but हमारा नाम binary system से चलता है. It is people generally take it as a numerological decimal system, उसमें apply करते हैं, but the inside power of a name, अगर कोई suppose for example anybody is asking for any name, जैसे for क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कोई सचिन बुला रहा है, या मोदी जी चिल्ला रहे हैं, there is a kind of a binary system which is forming and it is called as a fueling system. उसके अंदर fuel कितनी है, उस नाम के अंदर ताकत कितनी है, उस नाम के अंदर power कितना है, okay, and so that is very important. And the whole numerology system, one of the part is binary system, which जिससे कंप्यूटर चलती है 010101 on या off के system से. So our name has that power, and our date of birth has something called as a decimal system. हमारे date of birth, हम जो system follow कर रहे हैं, it is not a Vedic system. Vedic system से थोड़ा different है, but we are going to follow the decimal system of 0 to 9. 0 to 9 मतलब 0 is the beginning of something, that is called as a lagna or the ascendant, and 1 to 9 numbers, which has got different kinds of vibrations and the frequencies. So
the whole game of numerology is numerology and mnemology though very looks very similar, but they are completely different subject. But when we talk about numerology, the whole concept of the numerology जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा, and just which is going to be the greatest takeaway from your life at the moment, is going to be that what is your available number and what is missing number. So कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है, अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखें, जिसके पास अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ सारे नंबर मौजूद हो, कहीं ना कहीं कोई नंबर मिसिंग होती है उसके लाइफ में. किसी के पास 3 नहीं है तो किसी के पास 4 नहीं है, अगर कोई भी हम डेट ऑफ बर्थ करेंगे. So why this has been kept like that? Basically try to understand one thing is, अगर इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, अगर कोई भी चीज की हम बात करें, अगर हम बारिश की बात करें, अगर हम तूफान की बात करें दुनिया के अंदर, तो ये बारिश, तूफान, इलेक्ट्रिक करंट पोलैरिटीज पे डिपेंड करते हैं. पोलैरिटी के मतलब है करंट फ्लोज फ्रॉम अ हाई पोलैरिटी टू लो पोलैरिटी. जैसे अगर हम कोई पावरफुल कोई चीज चलाना चाहते हैं घर के अंदर, तो हमें एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल की जरूरत होती है. उसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिले तो वो सर्किट के थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगा. सिमिलरली अगर हम बारिश की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास 2 प्रेशर्स नहीं बनेंगे अर्थ के अंदर ज्योग्राफी में, अगर हम प्रेशर्स की बात करते हैं, जैसे हम मॉनसून की खबरें जब पढ़ते हैं कि अभी अरबियन सी के ऊपर एक प्रेशर बना है, उससे एक जैसे ही प्रेशर बनता है तो एक भाप उठता है, देयर इज अ क्लाउड विच कम्स एंड वो क्लाउड आके फिर बारिश करवाती है. तो देयर यू नीड टू हैव अ साइकिल ऑफ लाइफ. सो दैट इज व्हाई दिस अवेलेबल नंबर्स एंड मिसिंग नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अवेलेबल नंबर्स आर योर पावर्स. जैसे आपने कोई भी जन्मदिन जिस दिन में आपका जन्म हो, तो यू गेट वेरियस नंबर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ. So that becomes your power, and you will find that आपके पास कुछ numbers है जो कि missing है. So those missing numbers are actually your journey in this life. So you have to find out कि मैं वो missing number को कैसे इस जीवन के अंदर fulfill करूँ, so that I lead a fulfilled life, और मेरे orbit में जितने लोग हैं वो fulfilled life lead करें. मेरे आसपास मेरी community, मेरी offices, मेरी companies उस चीज को fulfill करें. And that is the purpose of numerology. Though it is very easy subject, but the game is to understand there are 2 things I really want you to take away from this today's workshop. Is the numbers are just not numbers. Numbers are connected with very 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 high level spiritual powers. Because आप उसकी अगर धीरे धीरे करके अगर उसके हायर एनर्जीज में चलना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे नंबर्स के पीछे powers are there. That is why I called this source numerology subject, because and it is directly connected with the source, with the creator. Because creator, आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर 1 की बात करता हूँ, नंबर 1 इज कनेक्टेड विद द प्लैनेट सन. सूर्य से कनेक्टेड है. इट इज कनेक्टेड विद द वाटर एलिमेंट, एंड सूर्य के साथ कनेक्टेड है. सूर्य के पीछे है देयर इज सम एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज वाहनी. नाउ वाहनी मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा नाव. इफ यू आर प्रेइंग इन द टेम्पल, और इफ यू आर प्रेइंग इन सम काइंड ऑफ अ प्रेयर, जब आप मॉस्क में कहीं पे भी प्रे करते हैं, कहीं किसी जगह पे प्रे करते हैं, तो योर एनर्जीज आर एक्चुअली टेकन इन द यूनिवर्स. कहीं पे जाके बिहाइंड द सन, दैट एनर्जी इज टेकन फाइनली टू द सोर्स. So these are the very high power levels. So my humble request, I can request all of you that from today onward, start respecting numbers in your life. आप देखेंगे नंबर के बिना आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, आपका बिजनेस नहीं हो रहा है. आप अगर कोई काम करना चाहेंगे, पैसा, the whole world of money works on numbers. आप अगर कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क चला रहे हैं, they are working on numbers. आप अगर अपनी बॉडी के बारे में हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर इमोशनल कॉन्शियस है, your whole valve of the body is dependent on number systems. The blood flow has numbers. DNA, RNA cells, tissues, mitochondria has numbers inside it. So the age has number. कौन सी एज के बाद, 7 years के बाद अगर हमारी बॉडी पूरी तरह बदल जाएगी, that is also numbers. So अगर डॉक्टर्स है, they know that what is the purpose of the 7 years, what is the purpose of 14 years, what is the purpose of 21 years. So each and every time. So from now onwards, be very aware that you have got so many friends, you have got so many powers that are actually connected with you, that are blessing you 24/7. So आज का takeaway should be from this workshop that you should start respecting numbers as much as possible in your life. Wherever you see numbers, it's very important because numbers are vibrating, numbers are blessing you, numbers are blessing you in a strange way. जब हम higher classes में जब हम प्रश्न कुंडलिनी के बारे में बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, suddenly certain number flash in front of you, or in your dream you see some numbers, and आप उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो even the dreams, the messages comes and shows you a number and shows you a path. So this is little higher, but हम अभी उस higher में नहीं जा रहे, because we wanted to keep things very simple and straight. हम ऐसी चीज चाहते हैं जो कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर भी समझ पाए, कॉमन पर्सन भी समझ पाए, ताकि वो अपने को मैक्सिमम बेनिफिट दे सके.
And you should be very very aware, very simply, there are like primary numbers and secondary numbers in numerology. एक number है जो कि simple आपके date of birth से आपको सारे numbers मिल जाते हैं. Now these are your strength numbers. और उसके बाद कुछ number उनको linear add करने के बाद आते हैं, they are called as secondary numbers. The secondary numbers are also very important. We can understand more about soul and all. But on the physical level, अगर आप आज इतना पता लगा लेंगे कि आपके पास 1 से 9 के बीच में कौन सा नंबर अवेलेबल है, that is going to be your strength of the numbers, because and those are the numbers which are giving you all the blessings. Now जो numbers आपके life में missing है, you have to actually go in the direction of that number. So this is very important. Have respect for the numbers. So what are the numbers tells you? नंबर्स क्या क्या चीज आपको बताते हैं? नंबर्स आपको आपके एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं. इस दुनिया में 5 एलिमेंट्स है. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 पंचभूत के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं. 5 एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूं, जिससे सारी दुनिया बनी है. आप बने हो, मैं बना हूं, मदर अर्थ बने हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, ब्रह्मांड बने हैं. दीज आर वुड, फायर, वाटर, अर्थ एंड मेटल. These 5 elements actually relate to the numbers. So numbers आपको इसके बारे में बना रहे. तो अगर आप numbers में interested हो तो you can easily become a doctor. By understanding this number theory, you can understand what are the elements available in that person. तो उसको किस तरह की बीमारी हो सकती है और किस तरह के उसको diseases हो सकते हैं. तो for a doctor it is very important to understand the missing numbers and the missing elements, available numbers and the available elements of the body. तो किस तरह की हमारे हर एक नंबर से हमारे एक ऑर्गन ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्टेड है. तो जिस दिन आप इस नंबर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में समझना शुरू कर दोगे तो you will able to understand that एक इंसान के पास क्या क्या प्रोपेंसिटी हो सकती है कि कौन सी बीमारी उसको आ सकती है, कौन सी बीमारी नहीं आ सकती है. एंड ऑब्वियसली द नंबर्स आर कनेक्टेड विद द प्लैनेट. तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी जुड़ जाते हैं, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो द बेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी. जब हम दशा की पैटर्न की बात करेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे ज्यादा से ज्यादा. एंड देवतास क्या पावर्स क्या है इसके पीछे नंबर्स के बारे में. नंबर्स टेल्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन. अगर 1 है तो उस बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी. नंबर 2 है तो ही विल बी मोर इमेजिनेटिव पर्सन. नंबर 3 है ही विल गेट सपोर्ट. इस तरह से डिफरेंट नंबर्स हैव डिफरेंट मीनिंग. एंड what is the vocation, उसके अंदर talent क्या है. The numbers can tell. The available numbers always tell about what are the talents and what are the things about the soul power. उसकी soul के अंदर क्या power है, क्या लेके आया है उसका soul, उसकी final consciousness क्या बोल रही है. It has got that. Numbers tells about various yogas. जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं या अदर साइंस में बात करते हैं कि there are various yogas in life. जैसे नभस योगा हो गया, गजकेसरी योग हो गई, you have got वासी वोशी योग हो गया. सिमिलरली न्यूमरोलॉजी में यूजिंग द पावर्स ऑफ द नंबर्स वेरियस योग्स आर फॉर्म्ड इन अ पर्सनस चार्ट. जैसे ही आप वो चार्ट, जैसे लोग लूशो ग्रिड की बहुत बात करते हैं, बट देयर आर वेरियस वेज ऑफ यूजिंग लूशो ग्रिड. देयर आर वेरियस वेज ऑफ यूजिंग लूशो ग्रिड फॉर द फिजिकल बॉडी. देयर इज अ वेरियस वे ऑफ यूजिंग लूशो ग्रिड फॉर architectural purpose. There is a method of Lucio grid in correcting the earth signs. So Lucio grid has been experimented a lot, and Lucio grid is a magical grid. Just looking at the grid, you can tell what are the yogas which are present in that person's chart. So astrology is a very easy science. जब मैं I was present with 23 persons in a classroom, and their teacher was explaining a date of birth and time of birth and place of birth. मैं उसका date of birth देख के मैंने बोल दिया कि this person has a stomach issue. Sir, आप इसका astrological chart open करके देखिए, you will find a stomach issue in the problem. So the teachers were looking into me and so how come you know that? I said I know by the blessing of numerology. Open it, and they opened the chart. Actually, they realized that the health, the moon is actually sitting in the 8th house. 8th house में पहुंच गया, and that is going to create a lot of stomach disorders. And he also has a 6th house and a 5th house problem. So the meaning was that even we don't need to open the time of birth, or we don't even look into the latitude and the longitude of the person. Just by looking in the date of birth, if you once you start practicing numerology a lot, you will see different charts. Because हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं चार्ट. हम हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों को ये कहते हैं कि आप रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो मल्टी बिलियनियर है, ट्रिलियनियर है जो दुनिया में आज के डेट में, इवन देयर आर सम कंपनीज व्हिच हैज रीच्ड अ ट्रिलियन वैल्यू, अब उनके चार्ट ओपन करिए एंड फाइंड आउट व्हाट हैज मेक देम टू बिकम billionaire. So they do their exercises and they found amazing information. They're just looking at a numerology, you can tell about how can some person become rich. Okay, they may have some other issues in their life, but you can find out that thing. So that is why numerology is very important to understand the various yogas that are present in a person. And obviously it gives you a direction of life. You actually come to know by looking just at a missing number, what is your direction of that. आपको किस तरफ जाना है दुनिया के अंदर, कैसे जाना है. बहुत easy तरीके हैं, बहुत complicated तरीके भी हैं. And we talk here about easy तरीका because we try to keep it very simple and straight. And
and we obviously finally, what is the use? You understand the source blueprint. See, understand the source has created everything in your in this life. So source ने सब कुछ बनाया है, and source ने कुछ laws, rules and regulations की है, which is called as a source blueprint. Now, when you are born in this world, you are born basically because of some kind of a karma or some kind of a reason. And when you are born, you have a blueprint inside, which is embedded in your soul, which is embedded, and your mind acts as a software. Your body acts as a temple, or your body acts as a place where the soul can come over and do the work and pass on the karma. So finally, numerology is ऐसी चीज है जो आपको clear cut दिखा देती है एक direction की yes, this is your blueprint of your life. You should work your life like this, so that you can have a final fulfillment. That the day, the day of this, or the day when we are about to leave this body, we should be in a happier, smiling face. Okay, we have done our work, and now it is time that we can exit. And we can also, the birth is a date, our life has date events. Also, death is a date. Death को हम बोलते हैं पुण्य तिथि, because उस वक्त हम एक दूसरे dimensions में we are entering, and when we are if you believe in past life. So that is the beginning of something else. So that is called as a Punya Tithi in astrology. It's a very important number. By looking at the number, and one can say where exactly the soul is going after this. So this numerology can tell about the complete picture, about your blueprint of the current life, what you have to do. And if you can follow that pathway, I think magic will take place. So this is what today I really wanted to share about understanding source numerology with you, so that you guys become more aware that there is a power which is inside it. So there is one way of going about this numerology, is that you can work on your own, you can work with a teacher, and you can start understanding different numbers and read. There are various scriptures, thousands of scriptures in the world, thousands of teachers are there in the world. But what we have got is for you. If you're interested, then I can share about it. We have got you can do one thing, you can go, you can start today respecting this number, and you will see that the numbers will start vibrating in your life. It will start, definitely it will start helping you in your life journey. You can become more conscious about the powers which are present in your chart, and what are the missing numbers. You can work on your own. You can spend a good amount of time and start learning and start meditating on your people. Many people are here in this at this moment who are they're doing work in these lines, and astrologers are there. They can do work on this place. But the other way around, you can spend around 5 hours of your life with us. There is a program which we do, and it is happening from this Tuesday to Saturday. 5-day program, 5-hour program. And in 5-hour program, we give you a hands-on training in understanding your numbers and understanding your life path, understanding your elements, understanding the planet behind you, and understanding your life vocation and what is the purpose of your life. So if you are interested, if you really wanted to know about the 5-day program, I can, if you say bring it on the chat box, I will bring those programs, and I will actually make you go through what are the 5 days you're going to learn about. So if you want, you can say BIO on the chat box. If you say, then only I will bring it up. But whatever I have learned, my main intention was here at this moment through this numerology course is I really wanted to make you understand the power of numerology, and I wanted to make you realize that क्या power है जो आपको really life में follow करनी चाहिए, क्यों आपको numerology को respect देना चाहिए. But अगर आप जानना चाहते हो आगे के बारे में, अगर if all the people are interested, then I will bring it out. And just if you type the word interested, then I will open the 5-day thing for you. Please type in the chat box, use your chat box. If you found whatever I have said is coming to interesting, if you really wanted to know about the 5 days, please you can type it in the chat box. I'm waiting. Thank you so much. Thank you, Ankit ji. I really want more people to be feeling interested. And thank you, Preeti ji. Thank you so much. There are so many people at the moment, but okay, I will just bring it on because we are actually almost reaching the end part. Yeah, thank you. Thank you so much. I'll just share this thing. Okay. So we have a 5-day numerology workshop, which is called as Redesign Your Destiny with Numerology. And it's a very interesting program. And I thank universe, thank God that they have. So in the day one, we really understand there's a kind of an orientation we go through. And this is what we do. We actually start making you attracted with your name and your date of birth. So these are understand today after this workshop, how you write your name is what you release message to the universe. So मेरा एक आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना नेम कैपिटल लेटर में बहुत अच्छी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए, जहां पे भी आप लिखें, whatever language you are following, whether you're following Urdu, whether you're following Hindi, whether you're following Bengali, whether you're following English, आपकी क्लैरिटी, अगर जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि क्या हुआ है आज के डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से ना हम लोग सारे भूल गए हैं कि
कि कैसे लिखना होता है हाथ से। तो हाथ से जैसे ही आप लिख लेंगे, यू आर एक्चुअली 5 elements, these 5 fingers are actually 5 elements of your body। ठीक है, जितनी अच्छी, there is some technique which is used in the oriental country which is called as a calligraphy। So the calligraphy, they teach you how to write your name। So when you write your name using calligraphy, you are actually creating a power and a mantra। Okay, remember this। So how you write your name is the first thing we do is to make the people write his name properly, and we also teach in the subsequent days how to write properly, because what you write is what you give। So there are Bengali people here, अभी इसमें आए हैं कलकत्ता से, तो उनको पता होगा सरस्वती पूजा के बाद we have a thing that 108 बार बच्चों को लिखाया जाता है Sri Sri Saraswati Namo। So there is a reason why it has been written। So there is when you understand the 5 power techniques, the power of soul, power of mind, the power of speech, the power of breath, and the power of writing, it's called as a 5 power technique। So if you activate this 5 power technique, you will able to send a frequency to the universe, and when you send a right frequency to the universe, so you get the frequency back। So your two friends are there, is your name and is your date of birth। So these are two different, so we help people write write about them in the first day. We do a kind of an orientation, we teach more about soul, the why source, how source is connected with with source, your soul and everything is connected, and we talk more, go more deep into numerology, we open up more gateways, we try to more understand more about numerology, we make people understand what is SWOT analysis, and then there are 4 aspects of our life. Whenever in the first part I said write your name properly, and you write your date of birth also. So you have a date number, you have month number, you have a year number, and the combinations numbers are coming. There is a constant number, there is a variable number, and there is a kind of a fadic number. So we talk about here 6 things, 6 aspect of your date of birth. So we talk about each and every aspect of what are these things represents in your life. Now, how the variable thing happen, how the constant thing starts happening in the life, what is the clock system of the body, very very important। Every human being in this world, जितने भी लोग आप देख रहे हो, उनके हर एक के पास अपनी एक क्लॉक है, उनकी बॉडी में चल रही है। So it is very important to discover what clock is running at the moment, and this clock is based on your active number and available number and in missing number। So the most important part is to understand the 6 divisions of your date of birth, to understand what is the clock which is running inside you। So this day it is very important that we tell about the different parts of your number। Day 2, the most important day, we try to understand the level of existence। जैसे अभी रूबिया जी ने पहले आके हम काफी डिस्कस कर रहे थे, जब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट ह्यूमन बींग्स, कहां से आप ह्यूमन बींग को मेजर करोगे। Human beings are not physical body, human beings are not mental body, human beings are not emotional body, human beings have also soul, they are connected with the higher powers of the universe। But a human being can operate from any of the levels of existence। Human being can just become a selfish human being, he can just live in the body part where उसको फूड की जरूरत है, कंफर्ट की जरूरत है, वो आपस में हर चीज वो अपने लिए कर रहा है। एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है वो माइंड से ऑपरेट कर रहा है, कोई सोल लेवल से ऑपरेट कर रहा है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कौन से लेवल से ऑपरेट करें। अच्छा, आप लोगों को मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको? इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, सो प्लीज लेट मी नो यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन ना। जस्ट टाइप इन द वर्ड यस इफ यू कैन सी माय स्क्रीन ऑन डे 2। Can you see my screen? Amit, can you see my screen? Yeah, thank you so much. Day 2. So levels of existence. Thank you, Ankit. And thank you, Dr. Mobani ji. Then we talk about really try to understand what is karma, what is good. Because see, whatever birth you have got in this world, whatever astrological combinations you have got, is because the source or the higher powers have given you a matrix because of all the karmas in this lifetime or any other time. So the karma is very important. Karma is the root cause of all success and failure in life. So we at the day 2 is a very important day where we not only understand about what is good karma and also bad karma, we also try to understand about the other karma. And the third karma is very very important karma, where we talk about, where many of the people are not aware of the term. We talk about the 5 elements in day 2. Now 5 elements matlab, if you understand the theory of 5 element once, just by looking at the chart, you are able to tell what diseases this person should be careful about. And because of the diseases, whether this person has going to be a financial issue in his life, whether he's going to suffer from a relationship issues, or he will be very unclear about his spiritual journey. So just by looking at the number and connecting it with the elements are so powerful theory. By looking at the element, you can say that this person should be much careful in doing business.
whether this person is going to be careful in relationships, and whether in trusting other persons, and whether he's going to give the kind of even a kind of a backstab of somebody. Yes, the 5 element can tell about, and this day 2 becomes very important. You understand about aspects of life. We just understand relationship, health, finance, but there are at least 12 to 14 aspects of the life which one should take care of. There is a case which has happened that a person completely had a very bad relationship with his family and friends because uske company ke andar there was a manager who was stealing from that company. So you need to understand, because numerology tells you that अगर आप कुछ चीज आपको missing है तो आपको समझ में आना चाहिए that what are the other things which can get affected, because the elements are all connected with one another. That's very interesting theory. And once you understand these aspects of life, you can easily pinpoint exactly कौन से aspects हमें देखने चाहिए, which is thing. A simple physical body can create a problem in finances, can create a problem in relationships. So everything can be seen once you understand the aspects of life. So day 3, we explain the second part of the number. First is the element, second part we understand, we try to correlate with the planets, with Devatas, with characteristics. Everything is explained in that part. And these 9 numbers, if even 0 is taken into consideration, we understand a little bit about the concept of the 0, why it is very important. And we understand 1 to 9 numbers, and we understand we understand special grids, and we understand the journey of numbers. Every numbers comes with a special power. जब जब वो नंबर आपके लाइफ में आएगा, वो कुछ चीज लेके आएगा. कभी कभी आपके लाइफ में विजडम लेके आएगा, तो कभी कभी वो आपको एक इल्यूशन में डाल देगा कि आप किस तरफ जाओगे. आप अच्छे इसमें जाओगे या कंफर्ट और एंजॉयमेंट की तरफ जाओगे. अगर एंजॉयमेंट की तरफ जाओगे, किस तरह की इफेक्ट लाइफ में पड़ेगी. एक जगह जब जैसे केतु आएगा, सो हाउ इट विल वॉश यू, हाउ सैटर्न विल व्हेनेवर इट कम्स, हाउ इट विल एक्चुअली टीच यू लॉट ऑफ लेसन्स, एंड हाउ यू कैन हैव clean book. So as a numerologist or astrologer, as a doctor, as a life science, as a person interested in these kind of subject, you need to understand what is journey of number. किस तरह से pattern, किस तरह से clock आपकी जिंदगी में आता है through different years, through different ages also. And it is very important to know that. And इस दिन हम एक exercise करेंगे, the power of money. We will try to understand why the super rich people have certain kinds of combination, and the student themselves find out this thing. This is given as an assignment. We give daily very simple assignment, very easy to do. The people who do the assignments, they get a lot of insights from this assignment. And the day 4, we talk about dasha of life, the dasha which we called about the clock system in the body. हर एक टाइम में कैसे clock system आपकी जिंदगी में एक्टिव हो रही है. And we talk about vastu. We talk about very simple vastu, because vastu is a very complicated process. Every human being has different vastu. One should be very clear. वास्तु कभी भी जनरल नहीं होता है. वास्तु कभी भी ये नहीं बोल सकते इस घर को इस जगह ये लग लो. Every human being has an astrological chart, और उसका वास्तु is a particular thing. But we will talk about the 5 element वास्तु. अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही, अगर आप किसी के घर में गए या आपने अपने घर में देखा और आप इस चीज को अप्लाई करते हो, तो आपके 5 एलिमेंट्स की जो फ्लो है आपके घर में, वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी. And we will talk about that in the day 4. And solutions to the missing number. Very easy solution to the missing number. अगर लाइफ में सपोज फॉर एग्जांपल आपके कोई मिसिंग एलिमेंट्स है ना, आपने बोला ओहो मेरे लाइफ में तो जिंदगी में ये मिसिंग एलिमेंट्स है. नहीं, ये मिसिंग एलिमेंट्स नहीं है, ये आपकी पर्पस है. कैसे कैसे आप स्मॉल स्टेप्स लोगे लाइफ में, ताकि वो मिसिंग नंबर विल स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड इन योर लाइफ. Day 5 is very important, where we actually discover what is a kind of a power of name, how name is related to numerology, and what are the 7-8 principles जिसको numerology को बहुत careful करने चाहिए. Because what happens generally, there are numerologists who suddenly they add up digits in the number, and उससे क्या होता है कि okay वो missing number आ जाती है, but there are some principle of yin and yang, there is some principle of fueling, there are some principles of binary digits which actually get affected when you have put in the number. So that's very important to know certain underlying principles. दुनिया में जितने भी गाना बना है ना, जितने भी सुर है, सारे गामा पाधा नीसा या डोरे मीफा सोला टीटो, इट इज बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इमॉर्टलिटी. जब मॉर्टेलिटी एंड इमॉर्टेलिटी टुगेदर कंबाइन होता है विद द बीट्स, देन ओनली यू प्रोड्यूस ए म्यूजिक, एंड देन इट प्रोड्यूसेस अ वाइब्रेशन व्हिच कैन हेल्प मैनकाइंड. जितने भी कलर्स इन दिस वर्ल्ड है, so if you mix all the colors you get white, if you remove all the colors, all the numbers, if you mix all the numbers you get white, if you remove all the numbers you get black, the final color. So the nemology is actually connected with some higher sciences, and we understand on the day 5 how to keep a company name, how to keep a name for a child, how to keep a name for a pet,
even at your home. We will understand what is the importance of pet in your family. So we will talk about that, and also we will understand how you can take up this, practice this numerology, and make it as a kind of an MSI for yourself. You can become ambassadors, and you can become use this numerology for the welfare of the mankind, and you can earn through, and how you can get also help from us in helping you develop your business or your vocation as an MSI is the next league. If you're, because finance and money is very very important. Try to understand, because life is passing through something after COVID-19. Everybody should be aware. अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो यू नीड टू टेक एनर्जी एक्शंस. डू नॉट डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कार्मा हैवी हो जाता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद कर्मा and the other person taking more. So when you charge money, it becomes a kind of an MSI for yourself. And उसमें कैसे हम आपको contents के साथ, text के साथ आपको help कर सकते हैं. All these things we teach you in this program. So are you interested in knowing what is the fee structure of this program? If you are interested, then I will share. Otherwise, you can contact me separately and on the. If you're interested, do let me know. I will share you with the fee structure. It is very easy and simple structure at the moment, because we are here opening up for the, this is a beta testing period which is going on, because we are opening officially from probably next week onwards. Okay, the valuation of this program is around 299 rupees, 299 rupees, but since it is a beta testing period, this course is actually a beta testing. This is the third batch which is happening, and we are doing a beta testing for the people. It is 299. Next batch onward, it is going to be 9999. So it's going to increase, because we are upgrading the program a lot. We are doing a tremendous upgradation of this program. If you are interested, I can share you the links of this number. You can go and check it out, and you can make the payment, and then we can enroll yourself on this program. And those people who enroll, so this is the link, so this is the link. So you can pay using any of the method, and you can send us a screenshot, and we will make you this thing. So meanwhile, what I will do, if you want to do though, so this timing of this program is it's going to start early, because all the spiritual subjects we actually want people to study. So the early you study, your brain function improves. Now what is the advantage of this program? It is a live program. I take it live. This is a very interactive program where we take your case studies, and where we understand you. So it's a kind of interaction. But the recording and the contents are provided. So anybody who joins, he can watch the recording any time of the day, any time of the thing. But I generally request people to join. It is from 8 a.m. to 9 a.m. in the morning, and it is going to start this Tuesday for 1 week. And we are going to keep, this is the last of our beta testing group. So iske baad we are not going to do beta testing. It is going to be a very high level course which we are opening from the next this onward. But the people who have joined, they are going to be very lucky that they are going to get it in this kind of an amount. And since there are upgradations are happening, and once you join, you can always join free of cost in any of our upgraded program, any of this upgraded program. Whenever this program happens, redesign your destiny, you can always join program as many times as possible. And yeah, obviously there are some people who have an issue at 8 to 9 p.m. But you will always, if you join, you will get a recording of that program, which is very useful for you. Which is going to be like an asset for you. You can watch it anytime. You're going to get content. आपको content मिलेगा. आपको सारी चीजें उसके अंदर से मिलेंगी, and you can easily use it for welfare of yourself, for welfare of others, see the things and all. So that is important. So if anybody is interested, and meanwhile I can share you one case study. If you're interested, I can show you one. Let me see if I have the screen sharing on. I can show you one. YouTube, where is my YouTube on? Is it not sharing? So you can hear from him. He's a practicing, the people, there are some students. This is Rajiv here. I've been practicing numerology for some time, but during my searches on the internet, I just able to see a post about source numerology. I felt this source numerology has something new to offer. Once I joined the course of source numerology, given by Mr. Dabba, and I got new insights into numerology. I do recommend it to people who are interested in numerology to get insights
बेटे बोल मेरा क्लास चल रहा है क्लास चल रहा है चल रहा है ओके बस 10 मिनट और है 10 मिनट में बात Yeah. So what is this? That there are like so many students who are giving good words about this thing which we are doing, initiative which we are taking to uplift numerology, and I thank God that He has chosen me to work on this. एक मिनट So आइए I cannot work on my own in this thing. I really need people to uplift this science, not only for themselves, for others. So anybody who is interested, he can go because this cannot be given free of cost, because there is a kind of energy exchange which obviously we are also doing some kind of an effort from our side. So those who are interested can yes, I will think, but you can copy paste this thing. I will do the needful, and those who really wanted to do. And any other question, you can just unmute yourself. So I will just give another 10 minutes time here, and we can talk on any question. You can just unmute yourself one after the. Yeah, Ankit ji, please unmute yourself and speak. Anybody who has any questions, either they can write in. Yeah, Preeti ji, if you have any questions, just do let me know. Please go ahead. Unmute yourself. Unmute कर लीजिए. आप बोलिए. पूछिए प्रीति जी. जी हेलो सर. हाँ बताइए मैम. हेलो नमस्कार. हेलो सर. I want to know. आप एक काम कीजिए. आप अपना ना आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए. प्रीति जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए. कुछ नहीं समझ आ रहा. हाँ जी. आप अपना वीडियो ऑफ करके बोलिए. आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा प्रीति जी. सर मैं जानना चाह रही थी कि अगर मैं रिकॉर्ड अगर आप मैं आपकी बात समझ गया. अगर आप वीडियो से नहीं समझ पाएंगी ना प्रीति जी, तो मैं जानना चाह रही थी कि अगर मेरे को मैं आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, बट मुझे एक चीज समझ में आ रहा है. आप जो चीज बोल रहे हैं कि अगर आपको वीडियो देख के समझ में नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से कि अमित जी एक बार. अमित जी यहाँ पे एक सीनियर स्टूडेंट बैठे हैं कि अमित जी कैन यू जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन फॉर प्रीति जी. अमित कुमार, आप इस क्वेश्चन पे आंसर कर दीजिए उनको कि उन्होंने कहा कि वीडियो देख के समझ में आएगा या नहीं आएगा, कैसे आप बताएंगे. तो अमित जी हमारे सीनियर स्टूडेंट है. उन्होंने अभी कोर्स किया है एंड काफी ज्यादा मुझे मतलब आई एम थैंक्स टू गॉड उनके अंदर से क्या फ्लो मुझे दिख रही है, मुझे समझ में आ रहा है. बट एनीवे जस्ट स्पीक टू प्रीति जी एंड आंसर दिस क्वेश्चन. Okay, thank you. Thank you for the question also and giving the opportunity to answer. Well, whatever I understand, I can answer. तो मैं कोशिश करूँगा. मैंने एक ही बैच किया है अभी तक सर का. अभी कल ही खत्म हुआ 5 दिन का कोर्स. तो जो मुझे समझ में आया वो ये है कि वीडियो में और इंटरेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसा आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आया जो आपको सर ने बताया, जो वीडियो में आपको सर ने बताया, तो आप वो सवाल सर से पूछ सकते हैं. और जब आप सवाल पूछेंगे तो उनका हैंड टू हैंड आपको जवाब मिल जाएगा उसी समय कि जो आपने जैसे सवाल पूछा सर से. उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज मिस हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग प्लस उसका जो मटेरियल है, जो डिजाइन सर दिखाते हैं, वो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है क्लास के बाद. या आप उनसे ऐसे भी बात कर सकते हैं कि अगर कुछ आपको सवाल है तो उनका जवाब दे देते हैं. मैं यहाँ तक आया भी नहीं था जहाँ तक आप लोग आए हैं, क्योंकि जब मैं ये कोर्स ज्वाइन किया था तो मैंने इनका पोस्टर देखा था और मैंने बस ज्वाइन कर लिया. तो आप तो लकी है कि आपको इतना भी सर बता रहे हैं. मुझे तो इतना भी इन्होंने नहीं बताया था. मैंने बस ज्वाइन कर लिया था ये सोच के कि चलो अच्छा हो जाए, और बहुत अच्छा हुआ. इसीलिए मैंने शेयर भी किया और ग्रुप में जहाँ से लोग आए हैं. थैंक यू फॉर कमिंग. बट आपको ट्रस्ट करना होता है मेन बात. तो थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर शेयरिंग. सो व्हाट प्रीति जी आई एम गेटिंग, जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट के बन जाएंगे ना, क्योंकि हम अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर द सोर्स. तो अगर हम आपके साथ सिंसियरिटी के साथ नहीं इस चीज को सीखेंगे, सो वी आर एक्चुअली अवेलेबल 24/7. हमारा मोबाइल 24/7 खुला रहता है. तो व्हाट इज हैपनिंग, जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा ना, आपको जहां से समझ में नहीं आएगा, वी आर गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग एंड वी हैव गॉट अदर टीम मेंबर्स आल्सो हु आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. कभी भी आपको कोई चीज की भी जरूरत हो, वी आर एट योर सर्विस. बिकॉज अगर हम आप अगर हमारे स्टूडेंट हो की चीज जब तक नहीं समझ पाओगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे.
So there are some people जिनके लिए इवन हमने स्पेशल का, उनको थोड़ा हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है, दे आर फ्रॉम विलेजेस, उन्होंने हमारी कोर्स ज्वाइन की, तो मैं उनको ना जूम भेज के उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आया, क्या चीज, बिकॉज एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अगर कुछ भी सामने हो रहा है ना, कि आप बहुत इजीली उस चीज को ग्रैस्प कर पाए. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सोल पावर, इट्स कॉल्ड एज सोल स्टडी, सोल कम्युनिकेशन. जब आप उस चीज को एक बार कर लेंगे अपने साथ ना, तो आप इजीली चीजों को पहले से ग्रैस्प करना शुरू कर देंगे. तो वी मे शेयर सर्टेन इन्फॉर्मेशन, कीप योरसेल्फ ओपन एंड यू विल गेट टू आंसर. यस अंकित जी, थैंक यू. अंकित जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ अंकित जी बताइए. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. हाँ जी, मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे लिंक भेज दीजिए, मैं ज्वाइन करता हूँ जी इसको प्रोग्राम. हाँ मैं आपको अभी तुरंत आपके व्हाट्सएप में लिंक भेज देता हूँ. एंड ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. हाँ, एनी अदर पर्सन, एनी क्वेश्चंस? रविया जी, सुशील जी, आप लोगों ने काफी देर से ज्वाइन किया, तो आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन शायद मिस कर गए, बट मैं फिर भी आपको भी वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इस चीज का. बिमला जी, एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक एनीथिंग, एनी रिक्वायरमेंट? अंकित जी आप मुझे एक बार इस चैट बॉक्स में ना अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा. जी सर. राइट जी, राइट. Yeah, please ठीक है, just सर, share कर your लेता number. Yeah, thank you so much. Right. Rabia ji, any questions, जी- anything? And जी just so सर. interesting. जी हाँ जी बताइए. जी सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा मुझे. Thank you so much. सब कुछ न्यू था. और फ्रीक्वेंसी के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में हाँ बताइए कि ना. समटाइम्स अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, क्या इज इट पॉसिबल कि ये जो हम 5 डे वर्कशॉप लेंगे तो इसमें हम अपना हायर फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को सेट कर सकते हैं? मेरे साथ अभी और आज- अगर कोई शख्स लोअर फ्रीक्वेंसी, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, पेशेंट है, और वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी. अच्छा, उसको मैं काफी चीजों से कह रही हूँ, मैं भी इसी चीज पे उससे बात कर रही थी कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है. जैसे फॉरगिवनेस के हवाले से था, उसका इशू आ रहा हाँ है. जी, हाँ जी. तो जब न्यूमरोलॉजी या ये वाला हम करेंगे तो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी? मतलब हम उसमें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आप बात कर रहे हैं. एब्सोल्युटली मैम. क्या होगा इस केस में कि हम जब आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे ना, जिस दिन आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे और जिस दिन हम आपको सॉल्यूशंस की डे के बारे में बताएंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, सिंस यू आर फॉलोइंग सर्टेन थिंग, जब आप किसी चीज को प्रे करती है ना, तो एक एनर्जी आती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, नंबर 1 थिंग दैट हैपेंस. जब आप उनसे कुछ मांगती है तो एक काइंड ऑफ अ सोल्यूशन आपके लाइफ में आता है. सेकंड, नॉलेज वाइज जब आप हम 5 एलिमेंट्स की जिस दिन बात करेंगे और उसकी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, इमीडिएटली आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सर्टेन थिंग्स जो आप करना शुरू करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. नंबर 5 मिसिंग होने से देयर इज अ प्रॉब्लम विद स्टमक अपसेट. नाउ इफ द पर्सन कैन just walking on grass, just walking on the stones जो होते हैं, जो हम गंगा किनारे या कोई भी नदी के किनारे जो स्टोन्स आते हैं, उसके ऊपर अगर वो अपना पैर रखना शुरू करेंगे और देयर इज अ थिंग प्रोसेस कॉल्ड एज ही कैन स्टैंड एंड डू अर्थिंग, उसकी 5 एलिमेंट्स आ जाएगी वापस एंड उसकी स्टमक सिस्टम विल स्टार्ट रिकवरिंग एंड रिजुविनेटिंग, प्रोवाइडेड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. अर्थिंग किया और उसने अब्यूज करना शुरू कर दिया किसी को, तो अलग बात हो गई, तो अर्थिंग मिस हो गई, तो एनर्जी मुंह में आ गई, वो निकल गई, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट हम एग्जैक्टली जब हम 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे, हम फिजिकल, जैसे हम लीवर इशू की बात करेंगे, तो क्या करना चाहिए कि उसकी लीवर इशू ठीक होना शुरू हो जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी टीच यू. एंड कोई भी पेशेंट अगर आपका है तो वो पेशेंट कैसे वो सब चीजें अप्लाई करना शुरू करेगा अपने लाइफ में, so that he can benefit from there. So that is the wonder of this program, because numerology is the base of everything and numerology is the base of health also. सही सर. Okay. इसको हम एनर्जी साइंसेस भी कह सकते हैं. इट्स आल्सो पार्ट ऑफ एनर्जी. देखिए, हर चीज फाइनली हर चीज की एनर्जी है, हर चीज की एनर्जी है, बिल्कुल ये. yes, हर चीज की एनर्जीज है और एनर्जीज को when we talk about frequency, without the help of the energy you cannot increase the frequency. The energy is connected Exactly. with everything is energy. Finally it is the energy, finally it is the higher consciousness we are talking about. So consciousness is a energy. जहां पे भी आप consciousness को लेके चलते हो, energy diverts in that place. Where you Exactly, take consciousness, the energy moves there. अगर मैं हाथ में हीलिंग करता हूँ, जैसे अचानक से किसी को पेट दर्द हो रहा, आपने हाथ लिया, ऐसे बैठ गए, so that means you are ऐसे ही. actually directing the energy to that place. So it is like energy starts to flow. So whenever you talk with the numbers energy starts working in your system of the body. जहां पे भी आपने attention डाला, तो उसकी energy will start coming in your life.
in various aspects. जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में जब हम नंबर्स को डालते हैं तो वास्तु के अंदर वो एनर्जी आनी शुरू हो जाती है और सेम चीज स्टार्ट्स फ्लोइंग इन योर लाइफ एंड इट स्टार्ट्स कमिंग इन योर लाइफ. So that is why we want the अच्छा एनर्जी को हम स्टक नहीं करना है, हम एनर्जी को राइज करके उसको बेटर यूज करना है. इट हैज टू फ्लो इन योर लाइफ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. It has to flow for the betterment. So what you do will come back to you with compound interest. That is the purpose of numerology. So it is finally all about energy, because without energy, nothing works in this world. It's a consciousness. बिल्कुल सर, ठीक है. Any थैंक यू other सो मच question? सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you so much. And if you need further help, I think there is a doctor. You can always speak to Dr. Mubani. He is a senior student of us. Yes, Doctor, are you there? Can you introduce yourself to the group for a moment? I know you are getting very busy. So he's a COVID warrior basically, and he is into so many things. Yes, yes, We are very proud to have Dr. Jalaluddin Mawani in our group as an ambassador of this program. So this is beyond anything, any religion. This is beyond anything. This is helping mankind. So that's the final intention. So people from all walks of life part of our group. Thank you so much, Doctor, for giving your time. I know you were today busy. You were even wearing the dress. आप अपने उस ड्रेस में हो, and thank you so much. So please share a little bit about yourself and how you recommend this program to others. I'm Dr. Mawani from Bombay, and I have done my basic course from Satyaji, and it was very much interesting, and it gave a very good insight of the numerology. Though I have learned from many of the sources, but the way of explaining and taking it to karmas and all numerology and all elements, that was wonderful, and it was very nice journey with him. And now I'm going to the major journey of the source also. From possibly tomorrow, my journey will start with him from the source point of it. Okay. So it's a nice experience having it. I just really wanted to inform you, as he mentioned, but he's actually our third level student. He's a very senior student, and so there are various levels of program. So it's very good that we have such a personality with us who is into our third level program. It's a wonderful. That's a different concepts altogether. So we have various programs. Our programs are like basically 360-degree and actually taking you a little higher. So it is like moving you vertical. So how can you increase your frequency? Finding this your frequency and what you do with the frequency. How many people's life you can change with this frequency? That is all about it. And it is very wonderful to have Dr. Mubani with us, and it was very nice and interesting. And same with others. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much for sharing. So Ravi, you can always connect with Dr. Mubani, and he will be of great help to you in guiding further in whatever you wanted to understand. And Amit is also there, so he can connect with any of them. So any other questions, sir? I think Mayank ji, welcome to this thing, and we are almost about to the end of this program. And but if you wanted to speak anything, you can unmute and speak. Mayank Vishwakarma ji. बस मैं ड्राइव कर रहा हूँ एक्चुअली. अच्छा, no issue, sir. You take your time, and maybe we will connect further. Thank you so much for being here. Thank you. Bimla ji, anything you want to speak? Sushil ji, Yash ji, anything you want to speak? Okay. I really thank all of you for being over here, and thank you so much. And we will end this program. And I pray to Source that may Source and numbers bless you beyond comprehension. Thank you. Really love you. Really honor you for spending so much time here in this Source numerology. Thank you so much. Best of regards to all of you. Thank you, Amit ji. Thank you, Vimal ji. Thank you, Yash. Thank you, Mayank ji, and those people we just lost connection with. Thank you so much, everyone. Take care. Bye bye. Thank you.